Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf, and today I'm going to talk about the general functions of ovarian hormone. But before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते आखिरत पर, जिनका आखिरत पे यकीन नहीं है, जिनको ईमान नहीं लाए आखिरत पर, यानी आखिरत क्या कि मरने के बाद जी उठना है और हमने सारे अमाल का जवाबदेह होना है और उस पे जन्नत दोज़ख का फैसला होना है, हमेशा की ज़िंदगी का फैसला होना है, ये आखिरत के ईमान है। तो जिन लोगों का इस बात पर ईमान नहीं है, ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके करतूत, उनके अमाल को खूबसूरत बना के उनके सामने रख दिया है। फहम या महून, वो अंधे हुए भटकते फिर रहे हैं। कि जो लोग आखिरत का यकीन नहीं रखते, आप देख लें माशरे में कि जो लोग आखिरत का यकीन नहीं रखते, वो जो मर्जी करते फिर उसी पे खुश हैं, बड़ा कमाल कर दिया मैंने। उनको वो अपने ये करतूत, ये गंदे मंदे अमाल जो भी कर रहे हैं, वो उन्हें अच्छे लगते हैं, बड़ा कमाल कर रहे हैं जी। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उनकी नजरों में हमने उनके अमाल को जीनतदार कर दिया। तर्जुमा देख लें, जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने उन्हें उनके करतूत जीनतदार करके दिखा दिए। वो खुश हो रहे हैं कि बड़ा कमाल है। आप माशरे में नजरें दौड़ा लें, मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप देखें माशरे में जो लोग इस गंदगियों में मुबतला हैं और वो खुश हैं कि बड़ा हम कमाल कर रहे हैं, यही तो जिंदगी है। तो अल्लाह पाक इनको फिर आगे बता रहा है, दूसरी आयत भी मैंने लिख दी है कि उलाइका लल्लज़ीना लहुम सुअल अज़ाब, इनके लिए सख्त बहुत बुरा अज़ाब है। वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में यही सबसे बड़े खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह पाक हमें इस बात की समझ दे कि हमने उस आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी करनी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we will talk about the functions of ovarian hormone. Ovarian hormone, we know that they are estrogens and progesterone. बड़ी हार्मोन यही हैं. There are some androgens as well. Inhibin is also there. Maybe some other minor important hormones are also there, but two important hormones, estrogen. There are three estrogens are produced in significant quantity from the ovaries. Significant quantity. That means there are some insignificant quantities वाली भी hormones हैं, बहुत थोड़ी. So three important. One is beta estradiol. That is the most potent and powerful estrogen in human beings. Then there is estrone, and third one is estriol. These three are the hormone, but actually it is beta estradiol. Human being में नॉन ग्रेविड फीमेल में ओवरी से जो हार्मोन्स आती हैं वो एस्ट्राडायोल भी है। ये एस्ट्रायोल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेकिन वो प्लेसेंटा से आती है एस्ट्रायोल जो है। So beta estradiol and estrone and estriol, these are the three progesterone estrogens which are produced. Beta estradiol is the most abundant and most potent hormone, and then the progesterones collectively they should be known as progestins. Most potent and powerful again, that is the progesterone, and there is 7-alpha hydroxyprogesterone as well, but the powerful and the important one is the progesterone only. So these are the hormones. Progesterone is the most potent and abundant hormone. Now, ovarian hormone, this graph we have seen several times. This graph is showing us the drastic variations in the female monthly cycles in the both of these hormones. That is, there is a very low level of both of these hormones during menstruation or at the beginning of the menstruation, and then the level of estradiol in first half is there, and but the progesterone is very low, and second half of the endometrial cycle or ovarian cycle, both of the hormones are high, and then at the end of that cycle they again go to the very low levels. So the drastic variation will affect the female body as a functions हम उस बॉडी में देखेंगे. जनरल फंक्शन दोनों के अलग अलग देख लेते हैं, फिर देन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को अलग करेंगे. फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन प्राइमरीली proliferation.
That is the proliferation and growth of the endometrial cell. ये तो हमने देखा है. We have discussed the endometrial cycle where there is proliferative phase is due to this estrogen. So proliferation and growth of the endometrium and development of the secondary sex character. जैसे female में हमने development of secondary sex character देखे, the single hormone testosterone is responsible for that. Here the estrogen is responsible for the mostly responsible for the development of the female secondary sex characters. वो हम आगे list करेंगे इंशाल्लाह ताला. And then it is also very important in the onset of labor, the process of delivery of the baby. And pregnant lady, after 40 weeks of pregnancy, the labor will start, the forceful contraction of the uterus will start, which will culminate to the delivery of the baby. And that onset, beginning, this estrogen has got very important role to play in the onset of the लेबर कंट्रक्शन, उसमें भी यहाँ काम करती है. सो ये जनरल हम बात करें, इनको एक्सप्लेन करेंगे, ये तो एक्सप्लेन करेंगे एट द टाइम ऑफ व्हेन वी डिस्कस लेबर. ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं. एंड ऊपर वाला तो हमने देख लिया, प्रोलिफरेटिव फेज इन द एंडोमेट्रियम हम देखा हुआ है. फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, ये हमने देखा था. सिक्रेटरी फेज ऑफ द एंडोमेट्रियम इज मेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन. दिस इज बीइंग थिकन्ड, न्यूट्रिशंस आर बीइंग डिपॉजिटेड, वहां पे डिपॉजिट हो रही है. सो दैट इज प्रोजेस्टेरोन इज प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन. प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस तैयार हो रहा है, ये एक बड़ा काम है. देन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी में भी इसका रोल है. Estrogen, we will see, estrogen causes the contraction of the labor, contraction of the uterus की contraction cause करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन उसको इनहिबिट करता है. So अगर ये इसी को छोड़ा जाए, estrogen का इफेक्ट छोड़ा जाए, तो it would have resulted into abortion. It will expel the contents. Estrogen तो उसको contract करती है, लेकिन progesterone inhibits the uterine contraction, so it is helpful for the maintenance of the pregnancy as well. So, and another very important function we will see, progesterone is responsible for the preparation of the female breast for the proper lactation. The lobules, alveoli, etc., they develop under the effect of progesterone. So breast is prepared for lactation by the progesterone. Pregnancy में हम देखेंगे progesterone कितना ज्यादा होता है. So ये जनरली बात करते हैं. इसमें से आप estrogen के फंक्शन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. So estrogen is the main responsible for the secondary sex characters. और पहला काम तो इसका यही है कि primary sex character जो बन चुके हैं, enlargement of the sex organs, like testosterone का भी हमने यही लेबल किया था. It is also responsible for the enlargement of this sex organ, the female sex organ, to the adult size, adult changes उसको हम कहेंगे. Puberty, the female sex organ change to adult shape and size. And the, for example, ovaries पहले dormant पड़ी हुई थी, now they become active, they enlarge. And the uterus जो छोटा था, बेबी का यूट्रस था, that size increases उसका, और फिर it is उसके endometrial cycle भी शुरू हो जाएगा. And 2 to 3 fold increase in size of the uterus occurs at puberty. Puberty तक बेबी में, फीमेल बेबी में यूट्रस का साइज बहुत छोटा है, डबल या ट्रिपल उसका हो जाता है साइज आफ्टर प्यूबर्टी. ये जो हार्मोन, this is the effect of estrogen. And then estrogen has got very important role in the endometrial cycle, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है. That is, it is responsible for the endometrial growth, proliferative phase, and even in the secretory phase, it continues to affect the endometrium. So it causes the monthly endometrial growth. So its effects, enlargement of the fallopian tube. We are talking about enlargement of these female sex organs. उसमें ये सारे भी, and fallopian tube. पहले छोटे fallopian tube है, अब size बड़ा हो रहा है, तो fallopian tube increase, especially vagina. Vagina also increases in size. Special change in the vagina is, this is, vaginal epithelium changes from the cuboidal to stratified epithelium. In female babies, the lining of the vagina, the internal epithelium, vaginal epithelium, is
cuboidal, simple cuboidal epithelium, but that is converted into stratified type of the epithelium, multi-layers, and multi-layers of the cells are there, stratified epithelium. And you know our skin is also stratified epithelium. This stratified epithelium is more resistant to damage, trauma को ये resistant है और better है. Now the vaginal epithelium changes from the cuboidal to stratified epithelium. Then there is enlargement of the external genitalia as well. Labia minora and labia majora, they also increase deposition of the fat in the mons pubis and the labia majora, etc. So generalized enlargement एक जिक्र कर लें और you can expand it on them, that. So enlargement, then uterus space, एक enlargement of the uterus की बात तो हम करके आगे. Size of the uterus increases 2 to 3 folds. Then proliferative phase, we have discussed, very important, is from neglecting. So this estrogen, every month it causes the proliferative phase of the endometrium. And in pregnancy, in pregnancy, it is very important effect on the myometrium as well. This causes more development of the muscles as well, because in pregnancy whole of the uterus fills whole of the abdominal cavity. सारा uterus पूरे abdominal cavity को cover किया होता है, and baby is there, and all the abdominal contents are pushed to the posterior back side way, or are they under the diaphragm push. Okay, so there is enlargement of the uterus as a whole. So myometrium as well increases in size. It has got important role in the that development of the myometrium. So, and then again, not only it causes more growth of the myometrium, it causes increased number of gap junctions between the muscle fiber, between the adjacent myometrial cells, muscle cells जो है. Gap junction जब ज्यादा होंगे तो क्या मतलब होगा? There is a more contractility, more excitability. So this will increase the contractility of the myometrium. Uterus becomes more contractile. और इसलिए मैंने पिछली एक दो स्लाइड पहले कहा है, it causes contraction of the uterus. But progesterone at the same time, pregnancy में progesterone का level भी बहुत high होता है. That inhibits it, and वो balance रहता है. Pregnancy continues for 40 weeks. So it increases the contractility of the uterus, myometrium, muscles of the uterus. The Braxton Hicks contraction which are present throughout the pregnancy, there are weak contraction in the uterus throughout the pregnancy. Mother can feel those contraction, feel होती है contraction of the uterus, but they are weak contraction. They don't push the baby, and these are due to this estrogen. वो ये contract करती है, progesterone उसको inhibit करती है, तो result is weak Braxton Hicks contraction present throughout the pregnancy. So this increases the force of the Braxton Hicks contraction, and that is the cause of onset of labor. Toward the end, progesterone level is decreased and estrogen continues to increase, and it increases the force of the Braxton Hicks contraction, and when it has increased, it will push the baby and labor will start. So the helps the onset of the labor. Toward the end of the pregnancy, toward 40th week of the pregnancy, after 38 to 39 weeks of the pregnancy, progesterone level becomes static. There is plateau in the progesterone level, but estrogen continues to increase, and this estrogen contractility of the uterus is increased. Braxton Hicks contraction, they become more powerful, and finally they are converted into labor contraction, and onset of labor is the function of estrogen. Oxytocin is not the hormone responsible for onset of labor. Estrogen and some other factors as well. Estrogen is involved in the onset of the labor. Oxytocin comes afterwards when the labor has already started. Then the oxytocin comes and helps the process of the delivery of the baby. So uterus पे तो ये function, endometrium function भी, myometrium के all that contractility पर भी बात की. Fallopian tube पे क्या effect है? That is, this effect similar to effect in endometrium. What are those? That is proliferation.
proliferation endometrium में proliferation करती है. ये fallopian tube की lining में भी it causes the proliferation of all the lining cells, which include the proliferation of the glandular cells and proliferation of the ciliated cells, and increases the ciliated movement of the cilia toward the uterine ostium of the fallopian tube, because this ciliated movement of the cilia is responsible for the propagation of that ovum or fertilized ovum from the ovarian tube of the ovarian end of the fallopian tube toward the uterine cavity. So the number of ciliated cells and glandular cells, those increase, and increases the activity of the cilia as well, beating toward the uterus, beating toward the cavity of the uterus. इसको क्या कहते हैं? Uterine ostium of the fallopian tubes. It helps the propagation of the fertilized ovum toward the uterus. Fertilized ovum हो या सैर ऐसे ovum हो, फर्टिलाइज हो जाए तो वो तो प्रेगनेंसी है, वैसे भी ओवम की प्रोपेगेशन टुवर्ड द यूट्रस इट हेल्प्स, वो तो फर्टिलाइज ओवम को यहाँ पे हेल्प करती है. सो फ्लोपियन ट्यूब के फंक्शन ईस्ट्रोजन के. Then breast. Secondary sexual characters of the female is development of the breast near puberty, onset of the before the puberty of male and female breasts are alike. They are similar, but at the beginning of the puberty, female breasts they start increasing in size and development of the stromal tissue. Number one. Stromal cells of the breast, they proliferate, stromal cells, and there is growth of the extensive ductile system. Stromal cells भी grow करते हैं और ducts भी बनती हैं. Breast की जो ducts हैं, जो milk producing organ बनाना है, so there is the extensive ductile system. Deposition of the fat, these are the three: proliferation, ductile system, and fat deposition. This causes the very slight development of the lobule alveoli. ये नहीं काम करती. ये lobule and alveoli वाला काम जो है थोड़ा सा estrogen का हो, it is the function of progesterone. Estrogen ये ऊपर वाले तीन काम करती है. Maybe some development of the lobule and alveoli may be the function. This is brought about by the progesterone. Primarily, lobules and alveoli of the gland, they are the functions of the progesterone. And prolactin as well. Yes, the prolactin भी लिखा. Prolactin is the milk secreting hormone. उसका function हम discuss करेंगे in lactation. So characteristic growth of the growth and external appearance of the female breast near puberty is the function of this estrogen. Male breast can also develop similarly. हाँ ये भी याद रख लें. It is not only if male have got some estrogen, अगर उनमें female hormone आ जाए, especially at near puberty, their breast can also develop. So male breast can develop similarly if sufficient female hormones are provided, especially up to the age of 20. Puberty उसके करीब है, बूढ़े लोगों में फिर नहीं ये काम होता. अर्ली ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल में भी हो सकती है, लेकिन मेल में इतनी ईस्ट्रोजन नहीं होती कि उसमें डेवलप कर सके. इन द लेटर पीरियड्स ऑफ लाइफ आपने फील किया होगा, देखा होगा, एल्डरली पीपल हैव गॉट समवट एनलार्ज ब्रेस्ट बिकॉज उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, ईस्ट्रोजन थोड़ी सी उनमें ज़्यादा हो जाती है, तो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट इन बूढ़े मेल्स में भी हो सकती है. तो फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन वी आर टॉकिंग अबाउट. ये तो हमने जनरलाइज वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बात कर ली हमने. जनरल इफेक्ट भी है. स्केलेटन भी, स्केलेटन ऑफ द फीमेल डिफर्स फ्रॉम द मेल स्केलेटन. सो इट कॉजेज इंक्रीज डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, इंक्रीजेज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. सो बोन फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बोन, स्ट्रॉन्गर बोन. प्यूबर्टी के करीब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द सडन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द फीमेल एज वेल. मेल में भी ऐसे ही होता है, फीमेल में प्यूबर्टी के करीब उसका कद तेजी से बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. मोर growth of the bone, elongation of the bone, because the epiphyseal cartilage is still present, अभी तक मौजूद है, इसलिए elongation of the bone can take place. So accelerated growth at puberty we do observe in female as well. So but there is a but. What is that? That is quick union of epiphyses. टेस्टोस्टेरोन के साथ भी हमने बात की थी. दैट आल्सो कॉजेस क्विक यूनियन ऑफ द एपिफिसिस, बट ईस्ट्रोजन इज मोर पावरफुल इन दैट रिस्पेक्ट. दैट इज ईस्ट्रोजन कॉजेस एक्सेलरेटेड ग्रोथ, मे बी टेस्टोस्टेरोन से भी ज्यादा है उसका, कि लड़कियों का लड़कों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है, आमतौर पर ज्यादा ही बढ़ता है, बिकॉज दिस हैज गॉट मोर पावरफुल इफेक्ट ऑन द बोन ग्रोथ. बट it causes much early disappearance of the epiphyseal cartilage, and when epiphyseal cartilage disappears, then the height of
the elongation of the bone will not take place, height will not increase. That's why average height of the female is less than the male. Male may go ke this estrogen is more powerful in growth promoting effect on the bones, but because of its effect on the early disappearance of the epiphyseal cartilage, ultimate height which is achieved by female on average height is less than the male. So quick union of epiphysis with shaft of the long bone. This effect is stronger than similar effect of testosterone, I have explained. So absence of ovarian hormone, वेरी टाल फीमेल यूनक्स, ये भी हमने मेल में भी हमने बात की थी. दोनों हार्मोन ना होना, मेल एंड फीमेल हार्मोन दोनों ना हो, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों ना हो, यूनक्स हो, तो देयर इज उनकी हाइट ज्यादा होती है. ट्रू यूनक्स जो होते हैं जिनमें बोथ मेल एंड फीमेल हार्मोन्स आर एब्सेंट, तो उनका हाइट इज मोर देन द नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल. स्केलेटन के इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. मेनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन खत्म हो जाती है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज अपोजिट इफेक्ट विल अकर. अभी हमने पिछली स्लाइड में डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी लिखा था, अब दिस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी विल इंक्रीज, दैट मीन बोन रिजॉर्प्शन विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द बोन फॉर्मेशन. ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, उसका रिजल्ट क्या होगा? वीकनिंग ऑफ द बोन इन मेनोपॉज. बोन्स में पेन होता है मेनोपॉज में, हार्मोन जब कम होती हैं, तो डिक्रीज बोन मैट्रिक्स, ग्रोथ ऑफ द बोन, उनमें प्रोटीन डिपोजिशन कम हो जाती है, एंड द कैल्शियम डिपोजिशन एंड phosphate deposition, all this depends upon the presence of collagen and matrix. जब वो नहीं बनेंगे तो कैल्शियम और फॉस्फेट कैसे डिपॉजिट होगी? So there is weakening of the bone and it may result into osteoporosis. We have discussed it, osteoporosis in relation with the calcium and the vitamin D etc. पैराथायराइड हार्मोन के साथ हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी जिक्र किया था. मेनोपॉज में osteoporosis is very common because of this effect, weakening of the bone. So osteoporosis and वीक बोन में अकर एंड इजी फ्रैक्चर में अकर. बूढ़े लोगों में, बूढ़ी औरतों में, स्पेशली बूढ़ी औरतों में इजी फ्रैक्चर, थोड़ा सा चोट लगी और फ्रैक्चर हो गया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो उनको कहते हैं. माइनर इंजरी से भी कभी कभी फ्रैक्चर हो जाते हैं. बूढ़े मर्दों में भी होता है, लेकिन उनमें चूंकि टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं जाती है, उनमें ये कम होता है, बट फीमेल में इट इज मोर कॉमन, और कभी कभी इसको ट्रीट करना पड़ जाता है. इतनी वीक बोन बाद फीमेल में इतना ड्रास्टिक इफेक्ट होता है ऑन द बोन कि यू हैव टू ट्रीट इट विद द ईस्ट्रोजन. आपको ईस्ट्रोजन टैबलेट देनी पड़ेगी उसके लिए. सो हार्मोन रिप्लेसमेंट, HRT जिसको कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डज हेल्प टू प्रिवेंट दिस एंड ट्रीट द ऑस्टियोपोरोसिस. बाद औरतों को HRT आमतौर पर देते हैं मेनोपॉज़ल, अर्ली मेनोपॉज में जब सारी हार्मोन खत्म हो जाती हैं तो उसको कुछ अरसे के लिए देते हैं हार्मोन कि उसको अडॉप्ट करे ग्रेजुअली. लेकिन ये HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ दिस. ये अगर हो जाता है. प्रोटीन, इट इज प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन. ये भी हमने पहले जिक्र, टेस्टोस्टेरोन भी है, लेकिन ये भी है. दिस इज काजेज द इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ द प्रोटीन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट एज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन को तो यूथ हार्मोन कहते हैं, वो तो मस्कुलर बॉडी मेल की बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन है. ईस्ट्रोजन का भी इफेक्ट है, बट दैट इज अ वीक. प्रोटीन डिपोजिशन ये भी करती है. स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, वो तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस करती है. उसकी को तो एथलीट्स दे यूज डोप टेस्ट, जिसको मैंने जिक्र किया था, दे कैन यूज देयर टू स्ट्रेंथन देयर मसल पावर और देयर परफॉर्मेंस. तो दिस बस ईस्ट्रोजन हैज गॉट द स्लाइट पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, दैट मीन more deposition of the protein, primarily due to the proliferation of the cells in many female organs and bone matrix. ये प्रोटीन कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं? एंडोमेट्रियल चेंजेस हमने देखी हैं, उसमें भी देखे हैं. इट इज काजिंग द बोन में भी कोलेजन इज बीइंग डिपॉजिटेड, प्रोटीन इज बीइंग डिपॉजिटेड. सो ये प्रोटीन पॉजिटिव बैलेंस इस वजह से है. टेस्टोस्टेरोन इन मेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डिपॉजिटिंग, वो एनाबॉलिक हार्मोन एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन, ये मैंने जिक्र कर चुका हूँ. Fats, this has got a very important effect on fats. मेल में टेस्टोस्टेरोन का ये वाला इफेक्ट नहीं है. फैट्स, इट causes deposition of the fat throughout the body. आपने अगर ऑपरेशन करेंगे
अपरेंटली लीन फीमेल आपको नजर आएगी, पतली मेल जब उसको काटेंगे तो स्किन के नीचे से इतनी इतनी फैट होती है, और जो मोटी औरतें हैं उनमें तो फैट होती ही ज्यादा है. सो देयर इज डिपोजिशन ऑफ द फैट एवरीवेयर. सबकोटेनियस फैट, मोस्ट ऑफ द सबकोटेनियस फैट सेल्स दे आर डिपॉजिटेड. ब्रेस्ट में फैट डिपॉजिट होती है, पहले भी जिक्र किया है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन भी होती है, थाइज में फैट डिपॉजिट होती है, बटक्स पर फैट डिपॉजिट होती है. तो थ्रू आउट द फीमेल बॉडी सबकोटेनियस फैट हर जगह फैट ज्यादा डिपॉजिट होती है, इसलिए फीमेल बॉडी इज मोर फैटी एंड मस्कुलर बॉडी, मेल बॉडी इज मस्कुलर. सो फीमेल फैट डिपॉजिशन गिव कैरेक्टरिस्टिक फेमिनिन फिगर टू द फीमेल बॉडी, ये भी जिक्र है. तो परसेंटेज ऑफ फैट इन फीमेल बॉडी इज मच मोर देन द मेल. So metabolic rate is increased but not as much as by the testosterone. फैट की डिपॉजिट कर रही है फैट की, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो ज्यादा इंक्रीज करती है वो टेस्टोस्टेरोन है, इसलिए उन्हीं की वजह से हाइपोक्सिया भी होता है और नंबर ऑफ आरबीसी भी ज्यादा होते हैं. सो इट कॉजेज डिपोजिशन ऑफ द फैट प्रोटीन एज वेल. स्किन पे ये जिक्र कर चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन इज मोर पावरफुल स्किन. फीमेल की स्किन वार्म एंड मोर डिक्रीजेस थिकनेस, इंक्रीजेस थिकनेस, टेस्टोस्टेरोन जैसी नहीं. फीमेल स्किन, फीमेल बेबी की निस्बत फीमेल अडल्ट की स्किन इज थिक because estrogen causes thickness of the skin, but and skin is soft and smooth texture. ये estrogen का काम है. Increased vascularity is also the function of this, and hyperemic compared to male. Male की skin के मुकाबले में female की skin में blood ज्यादा आता है, उनको कट लगे तो bleeding भी ज्यादा होती है male की निस्बत. तो there is warmth. Female skin is warmer because of this hyperemia. More blood flow है तो warm तो होगी ना. So increased bleeding when cut. So these hair distribution पे कोई खास इफेक्ट तो है नहीं. शायद so the pubic hair की growth में कुछ काम हो. Not great effect on the hair growth or the distribution. Maybe pubic hair growth at the puberty is also probably due to androgens. Androgen उसमें ovaries में androgen भी पैदा होते हैं या adrenal cortical androgen भी होते हैं. Maybe ये female hormone भी उसमें कुछ contribute करती हो. Water electrolyte balance, like all steroids, it causes the conservation of salt and water, और इसका result pregnancy में ज़्यादा prominent हो जाता है. Similar to all steroid, that is sodium and water retention by the kidney tubule takes place, and the effect is not significant in normal endometrial cycle. Routinely every monthly cycle में जो estrogen पैदा होती है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. But in pregnancy, when very high level of estrogen is produced from the placenta से estrogen का level बहुत ज़्यादा produce होती है, and that may cause the edema. Female pregnancy में आमतौर पर edema, तो थोड़ा edema in the legs और बाकी body पे भी edema is quite common in pregnancy because of this. Estrogen causes this retention of salt and water. In pregnancy, effect becomes important. Very high level of estrogen produced from the placenta causes more an increase in blood volume and salt. That is requirement during pregnancy. Pregnancy में ये सारी चीजें चाहिए, water भी चाहिए, salt भी चाहिए, और सारे बेबी के इस्तेमाल के लिए. तो there is इसका इफेक्ट है. तो those were the effects of estrogen throughout the body. Inshallah, वो next time we will talk about the functions of progesterone next video में inshallah. And if you have got some queries, ask in the comment section, and share this video to rest of your fellows and colleagues, and subscribe भी कर दें. तो ये सदका जारिया मेरा भी जारी रहे और आपका भी जारी रहे. Thank you very much. See you in next video inshallah.